Hello everyone, this is Abhinav J Jain. Today I am going to talk about study plan for civil services aspirants, especially for those who are going to give this year mains examination in coming September. First about us, this channel created by twin civil servants, me and my brother. I am Abhinav. I have got AIR rank 14 in this year's civil services exam. I'm from Delhi and graduated from IIT Kharagpur, after which I worked with private sector for about 3 years, and this was my fourth attempt, and I have sociology as optional. Uh, my brother Abhishek, he is IRS officer of 2016 batch, and he graduated from IIT BHU Varanasi, and he had public administration is as his optional, and secured one of the highest marks in his time. Now, first of all, why you need a study plan? Study plan is, I would say, is like Krishna for you. In Mahabharat, the warrior was Arjun. He had to fight on his own, but Krishna showed him the path. Krishna showed him the direction. In the similar fashion, study plan is going to do the same thing for you in your civil services exam. वो एक मार्गदर्शन की तरह आपका गाइड करेगा, आपके एफर्ट्स को प्रोडक्टिव बनाएगा. हाउ? फर्स्ट, इट विल हेल्प यू इन होलिस्टिक कवरेज ऑफ द सिलेबस. इस एग्ज़ाम में बहुत मल्टीपल टॉपिक्स को आपको कवर करना पड़ता है, एंड मैनी अ टाइम्स इफ वन गोज विदाउट स्टडी प्लान तो ही और शी मिसेस आउट ऑन सम ऑफ द टॉपिक्स, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन पेपर 3, social issues in paper 2, world history in paper 1, and some of the values mentioned in paper 4. So in to cover every keyword holistically, you need to have a study plan. And study plan also helps you manage multiple tasks efficiently. Like in next 90 days, you will have to cover your GS, optional, current affairs. So if you have a study plan, then you will be able to give adequate attention to each of these topics. Third, it helps in preventing procrastination. So it is one of the deadliest feature for any civil services aspirant. Then they tend to procrastinate the things. So study plan breaks this cycle and brings objectivity and clarity in your daily routine. Fourth is the scientific reason for study plan, wherein if you have a daily target in front of yourself and you achieve them, then a dopamine is released in your body, which gives you satisfaction and confidence. And it is very important for you to remain motivated. Last but not the least, is this study plan helps in preventing distraction and makes you remain focused in your preparation. So largely I will be talking about two types of study plans. First is for those who will be giving mains in this year in 2022, and second for pre 2023. This video is largely focused on the first part for those who will be giving mains 2022. And now coming to the main point. For those who will be giving exam, the exam is on 16 September. Almost 90 days are there. And what to do in next 90 days? First thing first, you need to cover four major aspects. First is all the GS4 papers and every topic all mentioned in every GS syllabus of yours. Second is essay. Third is your optional. And fourth is answer writing on all the three above. So I'll be specifically talking about how to do each of these things, and based on my experience, I feel it will be helpful for you. So how to begin? First of all, you need to do a self-assessment of yourself on the level of confidence of various GS topics and optional in that case. You need to self-assess which of the GS paper you are most comfortable, in which you need more preparation. So there cannot be a straight वन साइज अप्रोच फॉर एवरीवन. तो आपको खुद असेस करना पड़ेगा कि मुझे GS1 में ज़्यादा दिक्कत है या GS2 में, GS3 में या GS4 में. बेस्ड ऑन दैट असेसमेंट यू अडॉप्ट द ईट द फ्रॉग फर्स्ट स्ट्रैटेजी. इस स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि यू डू दैट थिंग फर्स्ट विच थ्रेटन्स यू द मोस्ट और विच विच यू इंटरनली फील्स इज मोस्ट डॉन्टिंग. सो उसका बेनिफिट ये होता है, दिस इज एन MBA मंत्रा वेयर इन if you do
if you do eat the frog strategy, first of all you get the confidence कि yes I can do it, and secondly it's a major psychological boost because you have attacked your biggest enemy first. So in that fashion, uh, handle that GS topic or optional first wherein you feel most underconfident as of now. लार्जली जो इन जनरल देखा गया है इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में एस्पिरेंट्स आर मोस्टली अनकंफर्टेबल विद द टॉपिक्स लाइक एथिक्स, और in their optional either paper 1 or paper 2 they are slightly less confident, and certain GS topics which are not in pre like world history, IR. So you can start with these topics and start quick revision around it. And the idea here should be that you have to ensure that you are not expanding your resources for any topic. आपको ideally तो you should be having notes of each of the keywords which are mentioned in the syllabus, जैसे कि पेपर 3 में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फूड सिक्योरिटी है, MSP है, GS2 में इट्स अबाउट पार्लियामेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तो हर एक कीवर्ड पे ideally you should have a 2 or 3 pager note for every topic. But even if it is not there, you can make any material as a reference material, standard material for you, and then do value addition on it in the next 50-60 days. ठीक है, don't right now is not the time कि आप from the scratch you are starting preparing notes for all the topic. Don't do that. If you have, well and good. अगर नहीं भी है तो अभी तक जो आपके कोई क्लास नोट्स हैं या कोई एक स्टैंडर्ड मटेरियल जो आप रेफर करते हैं, बुक या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को, उसको बेस बनाइए और उस पर वैल्यू एडिशन करके इन नेक्स्ट 60 days ट्राई टू कम अप विद few pager note on every keyword. Now how to approach for next 60 days. I'm talking about first 60 days जिसमें you will be gearing up for the mains. आप what you have to do is आप 60 days को weekly targets में convert करिए, which will be essentially like, अगर हम GSP के बात करें तो it will be like 15 days for every GS paper, essentially 2 weeks. And parallelly you have to start your optional revision as well, so it will be essentially 1 month for each optional paper. Paper 1 के लिए 1 month and paper 2 के लिए next month. So इसको स्टडी प्लान में कंसेप्चुलाइज करने के 2 तरीके हैं. ईदर यू कैन ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज. आई वुड प्रेफर गो फॉर सेक्शनल. उसमें आपके पास वीकली के टारगेट्स होते हैं कि एट द एंड ऑफ द वीक आपको जो टेस्ट लिखना है पूरा वीक उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं. द 60 days प्लान इज रफली मेड आउट बाय द इंस्टीट्यूट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ द स्केड्यूल ऑफ द टेस्ट सीरीज. उसमें सेक्शनल टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ये होता है कि यू गेट टू कवर ऑल द टॉपिक्स होलिस्टिकली. लाइक आई मेंशन, जैसे पेपर 3 में ही अगर आप फुल टेस्ट वगैरह लिखते रहते हैं तो यू माइट नॉट बी एबल टू कवर द फ्रिंज टॉपिक्स सच एज इंटरनल सिक्योरिटी, SNT, डिजास्टर मैनेजमेंट, विच आर इक्वली important and I would say more securing. So better to go for sectional test series, and it will bring structure to your weekly targets you are putting for yourself and help in answer writing. Even if you are not going for test series, have a weekly clarity for next 60 days. For example, let's say आप first 15 days में GS1 करते हैं तो first 7 days में you go for history and you cover the art and culture, you cover the ancient history, you cover modern history, you cover world history in first week. Then next week you go for society, geography, उनको आप cover करते हैं. So likewise for next another 15 days GS2 को आप divide करिए. First week में polity and social issues, second week में governance and international relations. So in this fashion prepare a whole 60 days plan for you और उनको भी break down कर लीजिए weekly targets में. That's how you should be, in my opinion, going up for the next 60 days. And separate targets and test series should be taken for GS and optional. जैसे कि GS में आई मेंशनड यू इन द सिमिलर फैशन ऑप्शनल का भी पूरे मंथ का टारगेट बनाइए कि पूरे मंथ में अगर मुझे पेपर 1 कंप्लीट करना है तो वीक बाय वीक
मैं कौन कौन से टॉपिक उसमें कवर करूँगा, एंड मेक श्योर यू कवर ईच एंड एवरी कीवर्ड विच इज़ मेंशन्ड इन योर सिलेबस. So that's how you should be focusing upon. And once you study any topic, do the previous year UPSC questions of that topic itself. अभी इट्स 2013 से लेकर अभी 21 तक ऑलमोस्ट 10 years के यू हैव UPSC क्वेश्चन पेपर्स विद यू. सो ट्राई टू स्टडी देम and gain understanding where you stand with respect to the revision and understanding for the respective topic. मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट 10 years के क्वेश्चन पढ़ लो, ज्योग्राफी करने के बाद ज्योग्राफी के लास्ट 10 year के क्वेश्चन कर लो, लाइक वाइज. सो दिस इज the fundamental aspect and the most important thing which you can do for next 60 days. Now coming to the answer writing part. एक part है what to study and how to study, that I have covered. Now coming to how to present it in better form. Answer writing की कैसे practice करें. So answer writing करनी है या नहीं करनी है, first question. My answer here will be obviously करनी है. Answer writing is the most important thing, especially if you are giving mains. So if you are thinking you will write your first answer directly in mains, then it's the biggest sin which you can do. So you definitely have to do answer writing. Now how to do it is, you can begin with writing for let's say 30 minutes initially, and then gradually on you can increase your time. And any which ways weekly तो you have to write a full 3-hour test. जैसे भी आप अपने schedule में either through test series or through yourself you will be testing your answer writing. And ऐसे answer writing भी करनी है. ऐसे में broadly आप एक ऐसे weekly का target कर सकते हो. उसके through you can initially start the essay writing part. I'll be coming to essay separately in the coming slides. Now in answer writing, time management is important. Ideally how you should break your time is 250 marks के पेपर में there are 10 marks question and 10 15 mark question, and if you do the maths then you have to spend 7 minutes in for a 10 mark question and 11 minutes for a 15 marks. That's how the ideal marks time should be given. And so because of it, you always write with a watch in your hand. Put a watch in front of you and then only write. And how I used to keep a track is, मैं क्वेश्चन पेपर पे ही क्वेश्चन के साथ में रफली टाइम लिख लेता था. हर क्वेश्चन के आगे उसका टाइम लिखता था कि ये किस पे स्टार्ट किया, नेक्स्ट कब स्टार्ट किया. तो आई गेट एन आइडिया कि कब वो मेरे को कितना टाइम लग रहा है हर क्वेश्चन में, एंड स्लाइटली आई मेकअप माई प्लान फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इनिशियली अगर आप एक्सीड टाइम कर रहे हैं तो डोंट वरी मच, डोंट गेट पैनिक. फर्स्ट इन नेक्स्ट 60 days at least your target should be to recall the content and write your best. And about the font size and the handwriting, see लेजिबिलिटी इज द की. आपका आंसर रीडेबल होना चाहिए, बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं हो. अननेसेसरली उसमें जस्ट टू फिल द पेपर उसके बीच में गैप्स नहीं होने चाहिए. इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल, एंड रिटन कर्सिव हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता. इट शुड बी easily readable. That's the only thing which you should follow. Now about the structure in the answer writing. The any answer should have 3 parts: introduction, body and conclusion. Introduction can begin with any fact, any quote, any example, any historical context. So for example, जैसे अगर कोई पॉवर्टी का क्वेश्चन होता है तो गांधी जी की कोट है कि गॉड कम्स टू द hungry in the form of food. So that's how you can begin. Or you can quote with fact कि कितने लोग around 20 million people go to bed with empty stomach every night in India. So you can or you can give an example of any hunger related death like it has happened few years back in Jharkhand or Delhi. Or historical context like India has one of the largest poor population, and the British rule and high population is adding burden to the problem of hunger. So that's how you can start your question. In body you have to focus upon keywords. क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें कीवर्ड्स दिया है. टेक राइट ईच एवरी पार्ट सेपरेटली एंड एड्रेस इट प्रॉपरली.
एक में ज़्यादा स्ट्रेस करना, दूसरे में कम, से यू गेट अकॉर्डिंगली मार्क्स। तो इसलिए आप दोनों को इक्वल, 2 या 3 जितने भी पार्ट्स हैं उनको इक्वल वेटेज देके पॉइंट्स आंसर लिखिए। और कंक्लूजन में इट शुड बी सर्टन फ्यूचरिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, एंड यू कैन मेंशन बेस्ट प्रैक्टिसेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज। नाउ पॉइंट वर्सेस पैराग्राफ, there is no straight jacket approach as such. You should be remain flexible. पॉइंट्स का बेनिफिट ये होता है स्पेशली इन बॉडी कि यू गेट टू कम्युनिकेट मल्टीपल डायमेंशंस इजीली, बट इट्स नॉट दैट एवरी आंसर शुड हैव अ सिमिलर पॉइंट्स लाइक फॉर्मेट। जनरली ऑप्शनल्स में क्या होता है कि पैराग्राफ से लिखने में कोहेरेंस आ जाता है, आइडियाज़ का एक फ्लो में लगता है। सो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द क्वेश्चन, if you have more points to write, if you have more knowledge, then I would suggest go for points. If the question demand is with respect to a in flow manner, in some coherent manner, तो you go with a paragraph, so उससे एक flow दिखता है। Now how to bring innovation in your answer? There are multiple strategies to it. You underline the keyword which you are writing in your points. जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में हम बोलते हैं कि इंडिया में रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है, बिकॉज ऑफ विच डिसीजन मेकिंग गेट डिलेड, तो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल इज द कीवर्ड, उसको अंडरलाइन कर दिया। मेक सम डायग्राम, उनको बनाने से थोड़ी क्लैरिटी आती है, इंडिया का मैप बनाने से, इन क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी और इन सोसाइटी ऑल्सो, रीजनल डाइवर्सिटी दिखाने के लिए। सो डू डायग्राम एंड मैप्स, यूज बॉक्स टू हाईलाइट सर्टन इंपॉर्टेंट फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल सी ए जी का क्वेश्चन है, उसमें यू नो द आर्टिकल, तो उस आर्टिकल को साइड में बॉक्स में लिख लेने से ज़्यादा उसकी विजिबिलिटी आती है। एंड फ्लो चार्ट्स, एंड सम पीपल ऑल्सो यूज ब्लू एंड ब्लैक बोथ पेन इन ऑर्डर टू highlight important things. So it's entirely up to you how you make your answer innovative, but innovation only comes if you follow, if you have done the first 2 points. मतलब unnecessarily innovation overdo करने से भी you won't get marks. Pen, there either go for gel or ball pen, it's entirely up to you. I have used ball pen in my initial attempts. This year I have written with gel pen. Whichever pen you are comfortable, do go with that pen. Abhi initial के few couple of months में you have time when you will be writing test for practice. उसमें आप देखिए किस में आप कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि यू हैव टू राइट 4 to 5 एग्जाम्स continuously day after day, तो उसमें you should be comfortable with it. It should definitely be light in weight and it should be easily flowing. That is the one characteristic you should be checking. बाकी gel है या ball है, blue, black, whatever you are comfortable, go with that. Generally blue होना चाहिए, so that is how you can go with answer writing. Now talking about how a day would look like you for next 60 days is, you have to divide your whole day into slots. Each slot can be of 2 or 3 hours. Roughly 12 to 14 hours is what you will be giving from now onwards. And for example, for a 12-hour study, you will be having somewhere around 5 to 6 slots, जिसमें आप दो स्लॉट्स जीएस को दीजिए, एक स्लॉट ऑप्शनल को दीजिए, एक स्लॉट में करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर को पढ़िए। करंट अफेयर्स कैन बी लिंक टू जीएस, कि सपोज आप अगर अभी जीएस में जीएस 2 पढ़ रहे हैं तो जीएस 2 के करंट अफेयर्स पढ़ लिए, आईआर पढ़ रहे हैं तो आईआर के करंट अफेयर्स पढ़ लिए। अकॉर्डिंगली यू कैन यूज दैट स्लॉट फॉर योर जीएस स्टडी ऑल्सो। एक स्लॉट रिवीजन के लिए रखिए एंड कीप वन स्लॉट फॉर नोट्स मेकिंग और एथिक्स, विच एवर थिंग विच हैव बीन लेफ्ट इन दी अबव 4 ऑप्शंस। तो उसके लिए you can divide your day. Ethics I have mentioned separately because ethics is something जिसमें थोड़ा टाइम लगता है उसको अंडरस्टैंड करने में, और फिर अंडरस्टैंडिंग के बेस पे रिप्रोड्यूस करने में भी टाइम होता है। सो इट माइट नॉट बी दी सब्जेक्ट जिसको आप सिर्फ 4 दिन पढ़ के यू कैन से कि आई हैव डन दी एथिक्स। माई रिकमेंडेशन वुड बी कि एक स्लॉट रोज़ एथिक्स रखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए कि जो भी आपने पढ़ा, लेट्स से इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा, एटीट्यूड पढ़ा, उसके अराउंड think up for the examples, think for relate it with the newspaper which you are reading. So that's how your ethical understanding will increase, and it will take time, and gradually after 40-50 days you might be able to have a good grasp over it. And जब आफ्टर 40 डेज जब आपका एक्चुअल में GS4 का पार्ट आएगा इन योर स्टडी प्लान, तब यू विल बी इन अ बेटर स्टेज टू understand the subject. Now on answer writing day,
जैसे वीक में आप आंसर राइट करेंगे तो ऑन दैट डे जो भी रिस्पेक्टिव पेपर है, अगर आप जीएस का पेपर दे रहे हैं तो उसका स्लॉट आंसर राइटिंग में कन्वर्ट करिए, अगर ऑप्शनल का है तो उसका स्लॉट आंसर राइटिंग में कन्वर्ट करिए. तो एंड मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग, वेयर इन विच टाइम यू शुड स्टडी मोर. I would suggest morning because essentially you need to be most productive during the exam time जो morning में होता है. So and morning also is you when you are more fresh to understand the things. So for a day you do keep the morning slots for learning things and keep the evening slots for more mundane activities like revision या newspaper. So that's how a day will look like you for next 50 or 60 odd days. Now coming to the essay. For essay, as I mentioned, you start with small essays. ज़रूरी नहीं है पूरा 1000 or 1200 words के essay से you begin with. Go with a small 2-3 page essay. Start a flair or thinking process कि how around the essay topics. उसमें prepare short notes on important essay topics like health, education, agriculture, international relations, women is a very important topic, technology, etc. And here the notes should focus upon writing anecdotes, quotes, examples, ideas, and now so now coming to the philosophical ones, like which was the case in this year 2021 essays. Sare, all 8 of them were philosophical, and it's the biggest Frankenstein monster which any candidate is afraid of. So in those essays, work on presenting the ideas and not the facts. There the flow is more important, and it is essential for you to break down the essay into subparts. I will be making a separate video on how exactly to go about approaching an essay and doing about it, but this is a broader framework for you to incorporate essay in your study plan. You don't neglect this. Give some time per week on it, and it is more about presenting yourself on the paper. And if you, even if you're not writing full essays initially, do try to prepare the mind maps on the previous year UPSC topics at least. Now coming to the last part, which is about how to go about in last 30 days. This uh, August and September, essentially how you should go. I would suggest the RRR approach here, wherein RRR means the revision, revision, and revision. You have to do revision in this part. You have to study the model answers of the test which you have given till now, and your own answers. You read them. Now you will be in a better position to do the introspection कि क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है. Appreciate the good aspects also, because most of the times हम सिर्फ गलतियाँ ढूंढने में रह जाते हैं. We are not able to understand what we are doing right. So do this self-assessment in this part and try to revise more and more. जो भी अभी तक आपने last 40-50 days में notes बनाए हैं उनको value addition करिए, उनको revise करिए, model answers को revise करिए, and at least once give exam exactly like mains, in which 2 days continuously you will be writing paper morning evening back to back. Do that thing at least for once, because it will be an answer writing marathon for you, and it will give you a UPSC like feeling before going for actual exam. Do it closer to exam, 1 week or 2 week before. Do this, and while now in last 30 days when you will be going attempting the full test or writing this UPSC like exam, it is the time here now jab you have to look for speed. Even if in your initial test, when in first 40-50 days जब आप sectional test दे रहे हैं थोड़ा time exceed हो रहा है, तो not to worry much. Obviously you cannot take 4 hours for writing a 3 hours exam, but if it is exceeding 15-20 minutes तो not to worry much. But now in last 30 days जब आप full test लिखेंगे तो look for speed right at this point of time. You are not exceeding more time in this situation. And again, keep a watch in front of you while writing the exam. For essays, do write one full essay paper, because you need to understand how you will be writing two topics simultaneously.
कि कई बार हम अगर स्टैंड अलोन लिखते हैं तो वी टेंड टू राइट सेम एग्जांपल हेयर अगेन एंड अगेन. सो राइटिंग टू एसेज विल गिव यू एन आइडिया कि हाउ मच योर नॉलेज बेस इज एंड हाउ कंफर्टेबल यू आर इन हैंडलिंग मल्टीपल टॉपिक्स टुगेदर. तो इसलिए एक ऐसे पेपर कंप्लीट लिखिए. एंड लास्ट, डू नॉट पैनिक, maintain your composure. In last 30 days it will be a situation wherein you will be might get distracted and you will feel anxiety. It will be natural, but remember to go back to the first point, which is RRR. Revise again and again. So I hope this video would have helped you. I will be coming up with such strategies again and again to help the future UPSC aspirants in performing well in the exams. And all the best. Do write in comment section what you want me more to talk about and what you further expect. So all the best. Thank you.